So, namaskar all of you. Odisha civil service interview ପାଇଁ जो theory classes ଆମର ରହିବ ତ ଆଜି ତାର first class ଟା ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ CIF form ଅଛି ତାର most important questions ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ approach କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ discuss କରିବେ ଓକେ এই क्वेश्चन गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट कहीं ना प्राय सबु पिला को ये क्वेश्चन पचरा हुए सबु कैंडिडेट्स प्राय तांको ये क्वेश्चन पचरा हुए तेनु एटा बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर बायोडाटा तापर पुनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी अछि बायोडाटा को नेकी ऑप्शनल ऊपर कोन पचर देबे ओके तो दैट वी विल सी हमर जो इंटरव्यू बैचेस रहउची सेथरे आपनकर ए बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बायोडाटा आपण हॉबीज उपरे वर्क एक्सपीरियंस उपरे अचीवमेंट्स उपरे आउ बहुत इंपोर्टेंट है ऑप्शनल उपरे तार ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आउ मॉडल आंसर्स आपण ऐप रे पाई पारे तो आज एही पर्टिकुलर वीडियो रे मु फोकस करिवि जनरल बायोडाटा बेस्ड क्वेश्चन जोडा समस्त को पचरा हो एटी गोटे इनसे मन रखिबे तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को आसीबा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज तो आर जहाँ से देखी मॉडल आंसर से तो ठीक ही अच्छी बट आपण निजर आंसर देवा पे चेष्टा करिवे कहना एटा डिफरेंट पिला पे डिफरेंट रहइबो ओके जोटे फ्रेशर रा आंसर ता टिके अलगा रहइबो जने ऑलरेडी जे मिडिल लेवल मैनेजमेंट रे वर्क एक्सपीरियंस रे अछंती 5-6 वर्ष 10 वर्ष खंडा एक्सपीरियंस अछि जेतु एज बढ़ी गला एलिजिबल अछंती ओके आउ इंटरव्यू पे सिलेक्ट हेचंती तांको आंसर ता अलगा हबो सी तो मोस्टली फाइनेंशियली सिक्योर्ड अछंती तांको आंसर तो अलगा हबो तो ये जो आंसर दिया होची आ पॉइंट्स जो एन्यूमरेट करके को हबो सेही पॉइंट ता आपन को देखिबार अछि तापरे आउ क्वेश्चंस कोन आपन प्रिपेयर करिवे व्हाई डू यू थिंक दैट यू शुड बी सिलेक्टेड हमें आपन काई सिलेक्ट करी जदि आपन सिलेक्ट न हेबे ताले कोन हबो कोन प्लानिंग तो जो स्ट्रक्चर फर्स्टली सर जदि मु यही कारण एटा मोर फर्स्ट कारण द्वितीय कारण तृतीय कारण एटा केते जण पिला काली रो क्लास रे पचरथिले कि को लैंग्वेज रे हम आंसर दबो तो ऑलरेडी आपण सेटा आपण फॉर्म रे भरि चंती को लैंग्वेज रे आंसर देबे किंतु गोटे कथा मन रखिबे एमिति किछि माने नै कि सेही लैंग्वेज रे ही से आपण को पचारिबे सपोज आपण ओडिया लेक्चर मो इंटरव्यू टा ओडिया मीडियम रे हबो किंतु से इंग्लिश रे क्वेश्चन पचारि परिबे तेणु तार थंब रूल है जो भाषा रे क्वेश्चन टा पचरा है से भाषा रे आपण आंसर टा देबे आउ कोन क्वेश्चंस देखिबा व्हाट विल यू डू इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड ओके आपण यदि सिलेक्ट न हेले ताले कोन ओके एटा हैला ए चारिटा क्वेश्चन हैला सबुटु फंडामेंटल क्वेश्चंस आपण कहि पर ओके केना प्राय सबु पिला को ए क्वेश्चंस पचरा हबो ही हबो तेणु ए जिनसटा आपण को माइंड रे रखिबार अछि ओके तापरे आउ भी जदि हमें देखिबा एगुडा सब आपण ऐप रे पाई जिवे आउ भी क्वेश्चंस जदि हमें देखिबा तो तार थियोरेटिकल पार्ट्स उडा देछि से गुडा आपण ताकू देखि दे परिबे केमती कोन आपण को अटायर एबे तो एते गरम होची तेणु बेसिक अटायर ही रखिबे जदि टाई आपण को ठीक ठाक अछि ताले से गुडा आपण यूज करिबे ओके एटा देखंतु बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन पर्सनल बैकग्राउंड एबे एते दरकार पडुनी आपण ना करिके से पचरनांती डिस्ट्रिक्ट भी पचरनांती तेनो एगुडा छाड़ दे परिबे मीनिंग एंड ओरिजिन तो प्रिपेयर करले कि असुविधा नै मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ योर नेम एनी इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज विथ द सेम नेम एनी इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज विथ द सेम डेट ऑफ बर्थ तो एटा टिके लंबा प्रिपरेशन दरकार पाई सब प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ with important details on economic, cultural and political aspect important personalities of your area এটা बहुत important suppose आपण भद्रक डिस्ट्रिक्ट रो आछन तले सिटी पचर परिबे भद्रक रो किए सब important लोक माने पॉलिटिशियंस सेमिति मु कहूनी बेसिकली राइटर्स हे गले जो माने नेशनली स्टेट वाइज आउ इफ पॉसिबल इंटरनेशनली ना करिसथि से मानन कथा आपण को स्कूल विषय डिटेल्स एंड इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर
स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कौन एथरे पचरा हुए इंसिग्निया ऑफ योर यूनिवर्सिटी किए फर्स्ट वाइस चांसलर थिले ओके प्रेजेंट वाइस चांसलर किए अछंती इंपोर्टेंट जो आपनकर एलुमनाई किए अछंती ओके जो माने आपनको इंस्टीट्यूट रू पास करथिले आ से माने बहुत माने रिकॉग्नाइज्ड होइछन सोसाइटी रे ए टाइप रो तापरे फैमिली बैकग्राउंड एबे से गुडा पचरा होनी हॉबीज बहुत इंपोर्टेंट जोटा को देखे भी दी तीनटा हॉबी हमें देखिबा तापरे आसिला एजुकेशनल बैकग्राउंड ता भी आपनको इंपोर्टेंट ओके पोस्ट ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन जहां आपण सब्जेक्ट नहीं चंती प्लस ऑप्शनल ऑप्शनल रो भी मु जस्ट केतरा दिन से आपण देखिबी केमती कोन प्रिपेयर करिवार अछि ओके काहे कि आपण ई सब्जेक्ट ता चूज करले एटा स्पेशली ए क्वेश्चन ता इंपोर्टेंट जदी आपणकर अलग अलग graduation subject or optional okay in case your optionals are not the same then why have you not kept these subjects as the optional और सेटा बेसी धरंतु मु मैकेनिकल इंजीनियरिंग रे बीटेक करछि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमर सब्जेक्ट लिस्ट रे भी अछि तेनु सेठी मु कहि परिबिनी कि यू नो भाबी जदी प्रॉपर्ली आंसर दवा पे पड़े ओके तापरे जहां भी आपनकर ऑप्शनल अछि और आपनकर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बेसिक क्वेश्चंस तार पचरा हेई पारे ओके देखो एगुड़ा सब पॉसिबिलिटीज कि ए पचरा हेई पारे गोटे कैंडिडेट को सब जिंस पचरा हो ठीक अछि इट डिपेंड्स ऑन योर लक आउ को पटे इंटरव्यूटा जाउची से हिसाब रे आपन को गोटे जिंस ऊपर पचरा हेई पारे बेसी आउ गोटे जिंस रु कम पचरा हेई पारे किबा टोटली पचरा न भी हेई पारे किंतु आपन प्रिपेयर करी तो सब छु आपन सेठी यू कैन नॉट टेक यू नो कि गोटे एतिकी पढ़ी गली सिलेक्टिव पढ़ी जिबारे बहुत रिस्क अछि ओके तापरे प्रोफेशनल बैकग्राउंड जहां वर्क एक्सपीरियंस अछि जे चाकरी करचंदी आपन को ऑर्गेनाइजेशन रो सब डिटेल्स प्रॉफिट केते हिची ओके किए सब इंपोर्टेंट जदी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हला तले सेक्रेटरी किए अछि दोस काइंड ऑफ थिंग्स रीजंस फॉर चेंजिंग जॉब और लीविंग द जॉब जदी आपन दी तीनटा जॉब स्विच करचंदी ओके एटा बहुत इंपोर्टेंट व्हाई डू यू थिंक दैट सिविल सर्विस is better than your current career okay so tapare asla optional eta most important again बहुत पिला को केवल ऑप्शनल क्वेश्चन रे इंटरव्यू सर जे केते पिला को ऑप्शनल पचरै हुएनी ओके जदी आपण कॉमन ऑप्शनल अछि जेमति कि हिस्ट्री हे गला सोशियोलॉजी हे गला पीएसआई रे गला आपण को क्वेश्चन सुडा अधिका पचरी वाला संभावना अछि ओके काहे कि आपण ऑप्शनल चूज करले in case your optionals are not same with your graduation or post graduation subjects then the reason for the same आपन को तो optional eta नुह post graduation की graduation आपन काई के नेले questions from optionals with relevant examples तो examples बहुत important from Odisha and India तापर current affairs तो obviously सेटा रहइबो okay तो standard list of questions भी दिया हिचे एतरे you can go through it one by one कोर्स रो लिंक टा आपनकर दिया हिची description रे you can go through that okay अच्छा तापरे आउ कोन देखियो आपनकर डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल सेटा आपनको जानिबार अछि ओके जेमति कि धरंतु बलांगीर डिस्ट्रिक्ट हला ओके तो डिस्ट्रिक्ट रो कोन अछि तार पूरा डिटेल्स करिका आपनको जानिबार अछि तार हिस्ट्री टा कोन को नाटा पड़ला बलांगीर रो किए सब रूलर्स थिले सेटा आपनको देखिबार अछि ओके इंपोर्टेंट प्लेसेस कोन अछि डेमोग्राफी इंपोर्टेंट प्लेसेस फॉरेस्ट कवर एगुडा सब दिया हिची से हिसाब रे यू कैन सी किछि डाटा आपण अपडेटेड डाटा देख परिबे कोन मिनरल्स इंडस्ट्री अछि एग्रीकल्चर ओके तो एटा टिके आपण को देखिया पड़े आपण को जा जिला अछि से हिसाब रे आपण देखिबे सब जिल्ला रो पीडीएफ्स दिया हिची ओके सो दीज आर थिंग्स ता भीतर सो माने आपण घोषिबा दरकार नै डेटाटा किंतु ओवरऑल इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स कोन अछि ओके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओके ता अंडर रे आपण को डिस्ट्रिक्ट रो प्रोडक्ट कोन ठीक अछि
एटा एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा आपनको समस्त मन रखियार अछि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और सेही प्रोडक्ट ऊपर ओके कोन फोकस अछि केमति ताको कोन गवर्नमेंट हेल्प करछि ताको मार्केटेबल करिया पे दिस थिंग्स यू हैव टू नो फॉर योर डिस्ट्रिक्ट तो ये गला डिस्ट्रिक्ट ओके तापर आसिला इंपोर्टेंट गोटे हॉबी एबे हॉबीज बहुत प्रकार अछि आपनकर अराउंड 32 हॉबीज रो ओके आपण ऑलरेडी हमें तक ये करछु मु तीन टा देखिबे एंति कि बर्ड वाचिंग देखिबा ओके व्हाट ड्रू यू टू बर्ड वाचिंग एज ए हॉबी तो आपण से हिसाब रे देखिबे फर्स्टली सेकंडली थर्डली फोर्थली how has bird watching contributed to your personal development how can bird watching help you as a civil servant what skills from bird watching can you apply to public service how do you think bird watching promotes environmental awareness can bird watching help in stress management as a civil servant how does bird watching improve your decision making abilities what challenges have you faced in bird watching and how did you overcome them how can your interest in bird watching benefit environmental policy how do you think bird watching can promote sustainable development SDG so in the various questions achi प्राय 15 रु 20 टा क्वेश्चंस अछि आपनको हॉबी की नहीं की ओके को हॉबीज हमरो एथरे इंक्लूडेड अछि ओके 30 क्वेश्चंस आई गेस एथरे अछि तमे ता बाहरु पढिबार किछि संभावना नहीं राइट जहा क्वेश्चंस भी पढिबो हॉबी ऊपर ऑब्वियसली आरी भीतर ही सेटा पढि आ गोटे जेमती हमें ब्लॉगिंग देखिबा तापर मु आपन पूरा लिस्ट ता कहि देबी ओके सो अगेन सेम जिंसो सेम क्वेश्चंस फॉर योर हॉबी ओके ये भी ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस एतरे अछि ओके तो लिस्ट आपन कहि दउ छी कोन कोन हॉबीज अछि आपन एटा ऐप रे भी देखि दे परिबे एक्टिंग अछि ड्रामा bird watching blogging blood donation coin collection okay then cooking creative writing cricket cycling diary writing gardening okay jogging internet browsing music painting photography poetry reading stamp collection okay philately jota then street plays teaching traveling ट्रेकिंग और हाइकिंग योगा ओके ए गुडा आपनकर कवर्ड हेची गोटे आपनको आइडिया मिल गले तापरे आपण हॉबीज आपनकर रख पारे हॉबीज मन रखिबे गोटे की मैक्सिमम दीटा पिला जो माने के जण शेयर करथिले काली सीआईएफ टा कैंडिडेट इंफॉर्मेशन फॉर्म रो तीनटा हॉबी चारटा हॉबी लिखछन नाही सेटा दरकार नै आपनको एते गुडे इनसे लिखियो ओके अच्छा तो एटा गला आपनकर हॉबी तापरे वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेटा हैला ऑप्शनल हैला ऑप्शनल रे कोन कोन आपनकर को ऑप्शनल अछि फर्स्ट मु सेटा कहि दउची एग्रीकल्चर एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक्स एजुकेशन फॉरेस्ट्री ज्योग्राफी जियोलॉजी हिस्ट्री होम साइंस लॉ फिलोसॉफी पब्लिक साइकोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी तो हम सोशियोलॉजी रे देखिबा why did you choose sociology as your optional subject okay how will your knowledge of sociology help you as a civil servant what is the significance of industrial and French revolution in development of sociology तो even जो क्वेश्चंस उडा पचरा हेई परिबो इंटरव्यू रे से टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी अछि ओके डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर रोल्स इन इंडिया क्रिस्प आंसर दबार अछि एमति नै आपण एक्सप्लेन करे अपन बस सेठी ओके क्रिस्प आंसर आपण को दबार अछि आ पूरा आपणकर सिलेबस एथरे कवर होची हाउ डू सोशल मूवमेंट्स कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज इन इंडिया ओके तो ईच ऑप्शनल रे एमती 50 टा क्वेश्चन अछि जोटा कि इंटरव्यू रे पचरा ही पारे डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली सेम टाइप रो क्वेश्चन हो हाउ डज द कास्ट सिस्टम कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस एजुकेशन इन इंडिया ओके 50 टा क्वेश्चन आपनकर ईच ऑप्शनल जो ऑप्शनल टा कहली तार अछि एटा आपण देखिले सोशियोलॉजी रो इट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑप्शनल्स एटा
तो सोशियोलॉजी रो देखैबी तापर धरंतु आपण पॉलिटिकल साइंस रो भी देखिबे PSIR ओके so obvious question why did you take this option ta chada what is the role of ideology in shaping political systems what are the main features of India's parliamentary system तो एटा आपनकर बहुत गुडे obviously आपण पॉलिटी रे भी जीएस रे भी पढ़थिबे what role does election commission of India play in ensuring free and fair elections okay especially jaha West Bengal re ebe heichi right what are the implications of judicial review in a democratic society which value so जो ऑप्शनल्स कहली सब ऑप्शनल्स को एमती 50 टा क्वेश्चंस आपनकर अछि ओके हाउ डज द थ्योरी ऑफ पावर एंड हेजेमनी अप्लाई टू मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस ओके एबे जहा भी युद्ध बुद्ध चलची ता संगे रिलेटेड देयर आर मेनी थ्योरीज ओके जोटा कि चाणक्यंकर राजमंडल थ्योरी अछि ओके अदर थ्योरीज आर आल्सो देयर सो सेटा आपनकर सिलेबस रे जाउची पचार दे पर एटा कॉमन क्वेश्चन एटा समस्त पचार ओके कहना पॉलिटिकल साइंस ऊपर समझ टिके नॉलेज था ठीक सेमती अलगा ज्योग्राफी होम साइंस फिलोसॉफी लॉ ओके होम साइंस रे देखिबा अवश्य एथरक जेति कि सैंपल साइज मु जानची होम साइंस रो एते बोधे रिजल्ट ये हेनी बट एनीवे सेटा गोटे इंटरव्यू सरला पर गोटे ओवरऑल सैंपल साइज हम जान परिबा ओके सो अगेन होम साइंस रो भी जति अपन देखिबे हाउ कैन द स्टडी ऑफ malnutrition inform the design and implementation of government nutrition programs like ICDS and Poshan Abhiyan. Okay, so it is nutrition, food and nutrition. How does the study of malnutrition inform the implementation of National Nutrition Mission, that is Poshan Abhiyan? What implication does study of textiles have for developing policies that support rural artisans and traditional crafts in India? So, एमती बहुत गुडे आपनकर क्वेश्चंस रहता ओके आ परे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन किबा इंपोर्टेंट सेगमेंट जोटा कि स्ट्रेस इंटरव्यू रे बेसी पड़े सेटा हला आपनकर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आपण वीडियो अछंती ए जिंस हला ताले आपण कोन करियो सो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस ओके सो बहुत गुडे मोर देन 200 सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस देचंती जेमती कि एटी सिचुएशन हला कोन कम्युनल टेंशन इन अ डिस्ट्रिक्ट you are the district magistrate of a district where communal tension has erupted how will you manage the situation to prevent violence natural disasters okay public protest against government policy लोक protest करछन्ती आपण केमती हैंडल करिवे allegation of corruption in your department handling a law and order situation during elections ensuring transparency in a government scheme managing water scarcity तो एमिति 5-6 टा सेट अछि एटा गोटे सेट रहला okay then other sets are also there are related to situational questions. Okay, so it happen पाई परिबे in your app link ता तळे दिया आइछि सेथुरु बे आपण okay you can go through it ठीक अछि तेणु मेनली ए जो किछिटा बेसिक क्वेश्चंस अछि एगुडा प्रॉपर्ली आपन को प्रिपेयर करिवार अछि ओके से लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को जोडा कि श्योर शॉट पडिबो काहे कि आपन सिविल सर्विस में इंटरेस्टेड अछंती काहे कि ता अलगा कोनोसी करियर पाए नाहंती ऑल दीस थिंग्स एटा गोटे खाता रे लिखि देबे आ मिरर इंटरव्यू रे एटा रिपीटेडली एटा प्रैक्टिस करिवे जोटा सी कोन पचरिबे तमे जानू किंतु एति कि तो श्योर पचरिबे हॉबी ऊपर जार प्रोबेबिलिटी अधिक अछि आपनकर पचरिबार आमे सेही हिसाब रे प्रिपेयर करि कि रहबा ठीक अछि सो बेस्ट विशेस एमती गोटे गोटे जोडा इंपोर्टेंट एस्पेक्ट सेटा म आपनको कहिबी 2 तारिख रु हमर 2 तारिख पर्यंत एबे करंट अफेयर्स और से सब दिन सोडा भी हमें डिस्कस कर दबा तापरे 3 रु आपनकर स्टार्ट होची मॉक्स ओके मुटिके ब्रीफली कहि दउची मॉक्स रो डिटेल्स करिका तेणु मॉक्स आपनकर सकाळ 8 रु स्टार्ट होची ऑनलाइन जेतु खरा बहुत होची बहुत पिला ऑनलाइन पे इंटरेस्टेड रहउछंती ऑनलाइन रो स्लॉट्स आपनकर रहउची 3टा स्लॉट्स रहउची ऑनलाइन पे सकाळ 8 रु 10 टा
तापरे दिन 4टा रु 6टा और राति 8टा रु 10टा ए तीनटा स्लॉट्स रोची ऑनलाइन ऑफलाइन पे जो माने इंटरेस्टेड क्लास रे आसी देबे हम सेंटर टा हैला मणिपाल हॉस्पिटल खंडगिरी रे तो वेल कनेक्टेड बाय मो बस एंड ऑल तो सेतु डायरेक्टली अपन आसी परिबे सेठी आपनकर रहउची 10टा रु 12टा गोटे स्लॉट रहउची संध्या 6टा रु 8टा आ गोटे स्लॉट रहउची तो डिपेंडिंग ऑन आपनको कन्वीनियंस हिसाब रे आपण आसी परिबे ओके तो ए जो नंबर जोटा स्क्रॉल रे दिया होची सेथरे आपण डिटेल्स करिका भी जानि परिबे ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो रे मु बेसिकली करंट अफेयर्स टा स्टार्ट कर देबी देखो करंट अफेयर्स बिना एमती नुह कि लाइक जैसे मेन्स रे पड़े कि प्रिलिम्स रे पड़े जो जिनसोडा इवन सेही दिन सकाळे भी हिथियो ना ताकू पचार दे परिबे ठीक अछि आउ आपणकर 14 तारिख नु स्टार्ट हबो तेनु सेते बडे इलेक्शन रिजल्ट भी आसी जैतियो 5टा 4टा स्टेट गोटे यूनियन टेरिटरी रो तापरे युद्ध रे कोन होची सेगुडा एई 300 टिके टिके आपको भल रे जानिबार अछि सो आई विश यू ऑल द बेस्ट नमस्कार।